why revision matters? First, you need to understand that. So I'm just going through what is the revision philosophy. Okay, what are the high weightage subjects, what are medium weightage subjects, and normal weightage subjects. Aptitude is required everyday practice. In every revision, I should solve all the workbook questions again. No, not like that. Every 3 months को PYQ का subject revision होना चाहिए. कौन सा क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट्स आप भूल जा रहे हैं, ओके राइट, सो दैट यू शुड मेक ए नोट. 1 to 2 hours इफेक्टिव 2 hours के लिए पक्का रिवीजन के लिए रखना ही रखना है. डियर स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू डूइंग ग्रेट. इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस about the best revision strategy for GATE Computer Science Engineering. Remember, if you don't plan proper revisions in the regular intervals, definitely you will forget the concepts, because some subjects are theoretical, some subjects are lengthy, some subjects you are having the formulas. So if you don't make a proper revision of the subject in the regular intervals, definitely you will forget some concepts, at least some concept. As a human being, if you don't touch the things even for 1 month or 2 months, definitely you will forget those things. So in this session I will explain the best revision strategy. It will be definitely helpful for you. Watch the video completely. Myself Balakrishna Sir, Faculty of Medicine. Right. So smart revision plan for maximizing your score, right? So let's see first why revision matters. First you need to understand that. Why revision matters? Retention, recall, speed, weak areas, accuracy and performance. So these are the important advantages. Retention, recall. You need to remember those things. Retention, recall those things, and the speed, weak areas identifying, and working on accuracy and also performance. So these are the advantages why the revision really matters. Fine. So next, if you observe, so how you will do the revision? So the first revision philosophy, if you observe, so first you will do the concept revision. Means once your class is completed, you will make the revision of that particular concepts. It means like your class notes indirectly. And later you will do the problem solving. Problem solving means I'll tell what is that, workbook, PYQs, everything I will explain in detail. So I'm just going through what is the revision philosophy. So first you will understand the concepts, revision of all your concepts, and later problem solving, and next mistakes analysis. So this is the revision philosophy. Right. So next, if you observe the things, subject priority matrix, you need to divide the subjects in the high weightage subjects and medium weightage subjects and normal subjects, normal weightage subjects. Like with respect to computer science, I will say high weightage subjects. What are the high weightage subjects? Programming and data structures and algorithms. These combined together, generally you will get around 20 marks. At least 20 marks definitely will get combined together both the subjects. Right. Next, other subjects, high weightage subjects, you can compare like I say like OS, DBMS and COA. These three comes under one category. And medium weighted subjects, I say generally the CN, TOC, discrete mathematics. Normal weighted subjects, generally compiler design, digital logic design. Right. But remember, these weightages I did not write. Prior preparing the PPT, because the weightages will keep on changing. You know that no subject is having fixed number of marks in the GATE exam. Sometimes they will give operating system 6 marks. Sometimes they will give 16 marks. And same case with the programming and data structure algorithm. But programming and data structures and algorithm combined together, definitely they will make 20 marks on an average. Every year definitely will get the 20 marks. So these two are high weighted subjects. And the next TOC, discrete maths and computer networks, and whatever. So according to the priority, they clearly given in the PYQ books. We have clearly given what is the weightage in every year, from each and every subject. So based on that, you can make a rough idea. What are the high weightage subjects, what are medium weightage subjects, and normal weightage subjects. See, I have written aptitude here. Aptitude is required everyday practice. I suggest to the students, whether you completed aptitude or not complete aptitude, I'm saying about reasoning and aptitude.
okay, reasoning and aptitude. And remember, every day you practice some questions. Maybe around every day, okay, you spend 15-20 questions, okay, from reasoning and aptitude. You have to solve. You have to solve. Okay, that you should remember. Okay. So next, in the revision, what you will do? Let us try to understand those things. This is the important slide. Listen to me carefully. Listen to me carefully. Okay, how the revision plan should be. So the first time, okay, solving the workbook and PYQs. Okay, first time you are going to solve the entire workbook and PYQs. Okay, right? Once the running subject is going on, like in the class, one subject is going on. Let us take the example. Running subject is going on, like for example, you take operating system. So you attend the class clearly and revise your class notes after coming from the class, and okay, you solve the workbook, okay, and you solve the PYQs. Okay. Remember, generally along with the class, definitely you have to complete the workbook. But parallelly, if you complete the PYQs also, then that is well and good. Because unnecessarily, if you postpone the PYQs, okay, unnecessarily it will take a lot of time. In the end, generally you will find, okay, so much burden will be there. Number of subjects will increase. So tedious things okay, going to happen. Okay, right? So, okay, right? Better, okay, along with the running subject only, okay, you finish, okay, whatever the pending works is there in the running subject, you finish along with that. Okay, right? So it means what I'm trying to say, if the OS is running in the class, you finish your workbook and PYQs along with the class only. Okay, right. Remember important thing, after solving all the questions, okay, from workbook and PYQs, listen carefully, mark against the question, like, okay, in the revisions. For example, first time you completed entire workbook, first time you complete entire PYQs. Next time revision में क्या करना है? Okay, generally students will have a doubt that okay, in every revision I should solve all the workbook questions again. In every revision, shall I solve all the PYQ questions again? No, not like that. First time you completed all the workbook, all the questions and all the PYQs. In the revisions, what you do is, when you are solving the questions in the workbook, you make a okay note. Okay, some questions as a R1, some questions as a R2. यानी revision 1 में जो questions करोगे, revision 2 में जो questions करोगे, और revision 3 में जो questions करोगे, you mark like that. Then what happens? I'll tell example. For example, in the operating system, you are having CPU scheduling chapter. In the CPU scheduling, you are having okay, you are having around okay 50 questions. Just say roughly you say 50 questions. So first time you completed all solving all the questions, and same you take PYQ. PYQ book CPU scheduling, you are having around 50 questions. Just say example. You completed all the questions, and when you complete all the questions based on your understanding, you okay mark okay against the question. Revision 1 में ये question फिर से करूंगा, revision 2 में ये question करूंगा, revision 3 में ये question करूंगा. Based on that you divide. For example, you are having 50 questions okay in the workbook. In the workbook, okay, you are having 50 questions. You mark some questions whichever you find difficult and easy questions, mixing together. Not all the questions, tough questions in the revision 1. It is not like all easy questions in the revision 2. Not like that. There should be a mix of both easy question and tough questions. So you divide okay these 50 questions into 3 revision. Revision 1 में 15 questions को mark कर लो, और revision 2 में okay right 15 question को mark करो, और revision 3 में okay in the revision 3 you mark 15 questions. Okay, total how many questions will be there? Now it is 45 questions. So you can ignore 5 questions. 5 questions you can ignore, okay, because there will be some easy questions also there, right? They are not required okay in the revisions. Is that clear? If you find a very easy question, you just ignore. So okay, in the 50 questions you are dividing the revision in the 3 parts. Okay, remember, okay, 15 questions in the revision 1 and 15 questions in the revision 2, 15 questions in the revision 3. You mark like that, okay, in the workbook. Okay, now in case, just in case, if you feel some question is very good, okay, that is the okay very logical question, conceptual question, and very good question, and you feel that you want to solve that in every revision, then what you do is you mark okay R1, R2, R3. Like for example, question number
क्वेश्चन नंबर 23, जैसे आई एम गिविंग एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 23 इज अ very good question, okay, in the workbook, okay, in the CPU scheduling chapter. Question number 23 is a very good and very important question, like so in that case you mark like this, R1 R2 R3. इसका मतलब क्या है बताओ, हर रिवीजन में ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ओके राइट। तो मतलब कुछ क्वेश्चंस को सिर्फ R1 लिखोगे, कुछ क्वेश्चंस को R2 लिखोगे, कुछ क्वेश्चन को R3 लिखोगे, और कुछ क्वेश्चन को, एक दो क्वेश्चन जो अच्छा लगता है आपको, सो उसमें R1 R2 R3 लिखोगे, इधर लिया राइट। सो दिस वे मिनिमम 3 रिविजन्स you have to do, minimum 3 revisions you have to do, okay, for your workbook and also for your PYQs, इधर लिया। नोट्स के बारे में भी बोलूंगा अभी, ओके, आई टेल यू अबाउट योर नोट्स आल्सो, डोंट वरी। सो अंडरस्टैंड हियर द सेम थिंग, ओके, विथ योर PYQs, same thing with respect to your PYQs. In the PYQs you are having around 15 questions, 15 questions है, तो you mark like this, revision 1 में 15 questions है, okay, revision 2 में 15 questions है, और revision 3 में 20 questions है, okay, right, 20 questions है, so you mark like this, इधर भी है। and same case if you find some question is very good in the PYQs, like for example question number 27, question number 27 बहुत अच्छा question है PYQs में, तो वहां पे उसके सामने लिखो R1 R2 R3, तो यानी हर रिवीजन में उसको टच करना ही करना है, इधर लिया राइट। सो दिस इज द ओके वेरी इंपॉर्टेंट प्लान, बिकॉज हर रिवीजन में सारे क्वेश्चंस करने के लिए टाइम नहीं रहेगा। In every revision you cannot solve all the questions because you are having 50 questions in one chapter, 50 questions in other chapter, total combined together in the entire PYQ you are having 1000 questions, just suppose example I am saying, maybe around 500 questions in every revision. Solving 500 questions including all the subjects, okay, very difficult thing, okay. First time you solved all the things, that is fine, okay, right. Next time onwards, okay, you follow this strategy. I think this is clear for everyone, right, okay. Now I think generally you will have a doubt, same thing, in हर रिवीजन में सारे क्वेश्चंस करना है क्या, नहीं करना है, और कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हर रिवीजन में करना चाह रहा है तो कर सकते, कुछ क्वेश्चन बहुत इजी है, रिपीटेड क्वेश्चंस है, रिपीटेड क्वेश्चंस है, ओके, उसको इग्नोर करो, जैसा मैं लिखा है 5 क्वेश्चंस है, अगर ऐसा रिपीटेड सेम टाइप कॉन्सेप्चुअल है, सो वी कैन जस्ट इग्नोर दैट, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, नाउ रिवीजन कब करना चाहिए, ओके, आइडियल रिवीजन टाइमिंग्स, सो आई एम टेलिंग एवरी 3 मंथ्स को, ओके, PYQ का सब्जेक्ट रिवीजन होना चाहिए, ओके राइट। फॉर एग्जांपल, ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सब्जेक्ट हो गया, ओके, यू टेक एनी सब्जेक्ट, एल्गोरिथम सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, आपका PYQ कंप्लीट कर चुका है आपने, देन द नेक्स्ट 3 मंथ्स यू शुड हैव ए प्लान, लाइक फॉर एग्जांपल, ओके, नाउ फॉर एग्जांपल जून इज रनिंग, in the June you completed, okay, algorithm subject, okay, you have completed workbook, you completed PYQs, you completed notes, and subject preparation is done. So after 3 months, okay, right, for example July, August, September, so you plan in the September, okay, right, maybe in the September mid or September ending, okay, you dedicate time for again revision of the subject. September के बाद next कब करोगे, right, okay, again 3 months, October, November, December, okay, राइट, सेम दिसंबर में हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट आफ्टरवर्ड्स दैट इज डन, ओके, राइट। सो जून में ऑलरेडी किया आपने, राइट, जून में कंप्लीट सब्जेक्ट किया, ओके, कंप्लीट सब्जेक्ट ऑलरेडी किया PYQ, ये फर्स्ट रिवीजन में हो गया, ये सेकंड रिवीजन में हो गया, अब इसके लिए थर्ड रिवीजन के लिए टाइम नहीं है, इधर लिया, राइट। अगर हो सके तो यू कैन डू इट इन जनवरी, अदरवाइज यू चेंज इट टू व्हाट, ओके, यू चेंज दिस टू व्हाट, नवंबर, सितंबर, अक्टूबर लेके नवंबर में ये करो, और ये जनवरी में ये दूसरा रिवीजन करो। जनवरी में क्या होगा, रिवीजन करते रहोगे और टेस्ट सीरीज देते रहोगे, राइट, समझ में आ रहा है, राइट, रिवीजन करते रहोगे, टेस्ट सीरीज देते रहोगे, ठीक है, दैट्स इट, ओके। नेक्स्ट, सो एवरी 3 मंथ्स PYQ का रिवीजन होना चाहिए, ठीक है, राइट, और नेक्स्ट एवरी 2 मंथ्स का, ओके, वर्कबुक का रिवीजन होना चाहिए। मतलब मेरे हिसाब से, ओके, आपका PYQ मिनिमम रिवीजन, PYQ मिनिमम रिवीजन, 3 रिवीजन होना चाहिए। 3 रिवीजन मतलब ऑल क्वेश्चंस नहीं है, सारे क्वेश्चंस नहीं है, मैंने बताया, ओके, R1 रिवीजन 1 में कुछ क्वेश्चंस है, और रिवीजन 2 में कुछ क्वेश्चंस, और रिवीजन 3 में कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है। और नेक्स्ट वर्कबुक का, ओके, वर्कबुक का जो है तो मिनिमम, ओके, 4 to 5 रिवीजन, 4 रिवीजन तो पक्का होना चाहिए,
सो मैंने यहाँ पे लिखा है ओके फॉर एवरी 2 मंथ्स वर्कबुक का रिवीजन होना चाहिए इधर भी है। सो इसके लिए क्या होगा R1 R2 R3 R4 कर सकते। देखो अकॉर्डिंग टू योर टाइम, आपका टाइम के हिसाब से। अभी टाइम देखो क्या हो रहा है, जून इज कंप्लीटेड। सो जुलाई अगस्त सितंबर, राइट, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी। ओके यू आर हैविंग मैक्सिमम हाउ मेनी मंथ्स, ओनली 7 मंथ्स। इन द 7 मंथ्स फॉर एवरी 2 मंथ्स मींस ओके यू कैन टेक एटलीस्ट मिनिमम 3 रिवीजन तो आप कर सकते हो। ओके राइट, 4 रिवीजन करे तो भी अच्छा है, राइट, 4 रिवीजन कर दो क्योंकि अभी तक ओके बहुत लोगों का कुछ 2-3 सब्जेक्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, because somebody already started preparation in the month of March, somebody already started preparation in the month of April, somebody started in the February also, okay right। so according to that उसके हिसाब से ओके अगर आपका 3-4 सब्जेक्ट हो चुका है ओके ऑलरेडी, तो ओके आप लोग 4 रिवीजन भी कर सकते हैं। जो लोग अभी अभी स्टार्ट किया प्रिपरेशन वो लोग 3 रिवीजन तो मिनिमम करो, राइट। सो ओके 3 to 4 रिवीजन, 4 रिवीजन है तो ठीक है, राइट। तो मिनिमम तो 3 रिवीजन पक्का होना चाहिए, मिनिमम तो 3 रिवीजन पक्का होना चाहिए, इधर लिया। सो 3 रिवीजन ये भी पक्का होना चाहिए मिनिमम, आप लोग प्लान कर लो कैसे करते हैं, ठीक है राइट। सो इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन, right? Because I'm telling you very important thing when I speak to the toppers, okay, after the result generally I take the topper stock. When I take the topper stock this year also I have done the topper stock. When I speak to the toppers they said okay, everybody said that okay they did minimum okay 4 times 5 times, somebody said 6 times also revision of all the PYQs. Revision of the PYQs they have done all the toppers minimum okay 6 times 5 times and 4 times. Okay, this is what I received. Okay, I asked generally how many times revision of PYQs you have done, so they said minimum 5 times, somebody said 6 times. That is really amazing, that is really amazing. Okay, so देखो PYQ of 6 times solve किया, so generally questions okay right, so based on similar type of concepts similar type of logic से ही होगा। Okay, some questions will be the newly framed will be there definitely, so that is okay, that will be there in every paper. Okay right, so understand here this is the okay for every 2 months workbook revision required. And next every 45 days, this is very important, for every 45 days notes revision is required, for every 45 days. This is very important, very important, please understand that point. Like for example your operating system class is completed, in the next 45 days definitely you have to touch the notes and you have to read the notes completely each and every line. You have to read the notes okay completely each and every line. Like for example your computer organization is completed, computer organization is completed now, okay immediately next after 45 days okay I'm saying that is definitely maximum upper bound is 45 days, remember. Okay, if you touch the book after 45 days definitely you will forget. In case if you do it in the 30 days then that is well and good, अगर 30 दिन के अंदर फिर से सब्जेक्ट को रिवाइज किया तो बहुत अच्छा रहेगा। आई एम सेइंग दिस मैक्सिमम 45 डेज, अगर मैक्सिमम 45 डेज के बाद भी 45 डेज तक भी अगर आपने सब्जेक्ट को टच नहीं किया डेफिनेटली आप सब्जेक्ट को भूल जाओगे। Like computer networks so much okay lengthy is there, okay DBMS operating system, these are the subjects like you are having theoretical things, you need to remember definitions okay concepts. If you don't even touch the notes okay for 45 days definitely you will forget, then you will find very difficult to do the revision of the workbook questions and you find very difficult to do the revision of PYQ questions. Okay, so definitely, so I am repeating once again, for every 3 months PYQ revision होना चाहिए, for every 2 months workbook revision होना चाहिए, for every 45 days notes revision होना चाहिए. This is very important. Is that clear? So you plan accordingly how you will make, क्योंकि because the problem is somebody starting the preparation in the June, somebody again still the students are coming and they start the preparation in the month of July. So it depends okay when you are started. For some students already 50% syllabus completed, कुछ लोगों का ऑलरेडी 5-6 सब्जेक्ट खत्म हो चुका है, राइट। सो अलग अलग तरीका स्टूडेंट है, ओके राइट। सो आई एम सेइंग ओके जो लोग वर्कबुक का 4 रिवीजन लगा सकते हैं सो वो लगा लो, राइट। सो मिनिमम 3 रिवीजन इज डेफिनेटली रिक्वायर्ड। अभी ये तो पक्का इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, एवरी 45 डेज में नोट्स का रिवीजन पक्का होना चाहिए, सो दैट इज डेफिनेटली रिक्वायर्ड, सो दैट इज ओके आइडियल रिवीजन टाइमलाइंस। इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन?
Okay, right. So hope that is clear. Next, so first revision strategy में क्या होना चाहिए? Understand here. First revision means when you are doing, once you completed all the PYQs workbook, right? First revision, जब आप first revision आप कर रहे हैं, okay, क्या करना है? Please understand here. Note weak areas. नोट वीक एरियाज, एक अच्छे से नोट्स लगा लो. ओके, फर्स्ट रिवीजन में आपको ये मालूम होना चाहिए, ये मालूम होना चाहिए, ओके, ये क्वेश्चंस में तुम कौन सा क्वेश्चन में नहीं कर पा रहे, हटक जा रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट्स आप भूल जा रहे हैं. ओके, राइट. सो दैट यू शुड मेक ए नोट. लाइक फॉर एग्जांपल आई टेल यू लाइक, ओके, मे बी इन द सीओए, ओके, पाइपलाइनिंग में कुछ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है. ओके, राइट. कैश मैपिंग टेक्निक्स में कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है. ओके, नो डाउन, वेयर यू आर फाइंडिंग डिफिकल्टी. In the operating system, you are having doubts in synchronization, understanding some definitions. Okay, right? Note down that topic. Okay, right? In remembering, okay, कौन सा एरिया से आप याद रखने में, कुछ चीजें याद रखने का रहेगा. Okay, maybe some formula, concepts कुछ, okay, logically designed concepts रहेगा. Okay, उसको याद रखने में तुमको दिक्कत हो रहा है, तो वो वाला अच्छे से एक नोटबुक में लिख लेना. Okay, note down that. सेम वर्कबुक में PYQ जब सॉल्व कर रहे हैं, जब आप रिवीजन कर रहे हैं, देखो फर्स्ट टाइम वर्कबुक सॉल्व कर रहे हैं तो डिफरेंट है. फर्स्ट टाइम वर्कबुक सॉल्व कर तो क्या होगा, अभी सब्जेक्ट रनिंग में है, नाउ द सब्जेक्ट इज रनिंग एंड along with that, okay, you are solving the workbook, then that is okay, you find easy. But after doing, okay, first revision, maybe after around 45 days gap or maybe 1 month gap, you are doing any PYQs, okay, you will forget the concepts. So कौन सा, okay, टॉपिक्स में आपको कुछ डाउट हो रहा है, याद रखने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, वो वाला थोड़ा अच्छे से नोट डाउन कर लेना. इज दैट क्लियर? सो आपको थोड़ा याद रहेगा, ओके, ये एरिया में मेरे को ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि भाई ओके, वो प्रॉब्लम फिर से करते समय में क्या हो रहा है, आपको दिक्कत हो रहा है, राइट? यू आर फाइंडिंग डिफिकल्टी इन सॉल्विंग दोस थिंग्स. सो देन ओके, ऑब्वियसली ओके, उसको अच्छे से नोट डाउन कर लो. ओके, रिवाइज दोस कॉन्सेप्ट्स वंस अगेन. ओके, राइट. ओके, सो नेक्स्ट, ओके, रिमेंबर सेकंड रिवीजन में क्या होना चाहिए, सेकंड रिवीजन स्ट्रैटेजी. देखो फर्स्ट रिवीजन में आप अच्छे से ओके नोट डाउन कर लिया, कौन सा कॉन्सेप्ट में आप थोड़ा भूल जा रहे हैं, थोड़ा वीक है, ओके, उसको अच्छे से कर लिया, फिर से प्रैक्टिस किया वो क्वेश्चन को. अब सेकंड रिवीजन में क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, एग्जैक्टली यू आर डूइंग सेम मैनर. देखो फर्स्ट रिवीजन में जो अच्छे से सॉल्व किया क्वेश्चन को अच्छे से, ऐसे ही सेकंड रिवीजन में आप सॉल्व कर रहे हैं, देयर इज नो यूज. ओके, सेकंड रिवीजन में क्या होना चाहिए, ओके, फोकस ऑन स्पीड एंड रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स. I say speed and accuracy. Okay, you need to focus on what? Speed and accuracy in the second revision. And also कौन सा कॉन्सेप्ट ज्यादा रिपीटेड हो रहा है, ओके, उस पर थोड़ा ध्यान रखो. ओके, ये एरिया में ज्यादा क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, हर साल में क्वेश्चन इसमें ये एरिया से क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ा रिपीटेड कॉन्सेप्ट जो है उस पर फोकस करो और स्पीड एंड एक्यूरेसी पे फोकस करना है. अगर सेकंड रिवीजन करते समय में भी आपका स्पीड इंप्रूव नहीं हुआ, okay, you are not improved the speed, okay, even in the second revision, obviously, okay, you are not improving. Okay, it means what is the solution, you need to practice more and more questions. second revision आ गया, फिर भी आपका स्पीड नहीं बढ़ रहा है, okay, फिर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस और ज्यादा क्वेश्चंस, okay, आपको प्रैक्टिस करना होगा. okay, right? So that is important. ठीक है. And next, PYQ centric revision. See this here, PYQ के लिए I told already how many years, this is an important question, right? Somebody will say that for 25 years questions are there, last 30 years questions are there. Okay, remember, solve at least, okay, I say at least 20 years. This is my recommendation, solve at least 20 years. Okay, if you solve around 25 years and 30 years, okay, if you are having time, remember it is not like, okay, आप एक ही PYQ पकड़ के आपने एक महीना पकड़ लिया, एक ही PYQ सॉल्व करते समय में ओके आपने 20 दिन लगा दिया, ओके, राइट, नहीं तो ओके 30 दिन लगा दिया, सो टाइम वेस्ट होगा. यू शुड बी स्मार्ट, आपको कहां पे रुकना चाहिए, वेयर यू नीड टू स्टॉप, ओके, राइट, दैट आल्सो यू शुड रिमेंबर. ओके, राइट, अननेसेसरली यू आर गिविंग टाइम, ओके, सॉल्विंग इन PYQs फॉर 25 years 30 years, ओके, 1 month इसी को कर रहे हैं, so that is no use. ओके, राइट, सो ओके, एटलीस्ट 20 years, साल 20 years. अगर आपके पास टाइम है, आप टाइम मैनेज कर सकते, तो आप 25 years का भी करो, ओके, लास्ट 30 years का भी करो, नो प्रॉब्लम. इज दैट क्लियर, राइट? बट आई एम सेइंग दिस इज मिनिमम, एटलीस्ट सॉल्व 20 years, प्रीवियस 20 years. ओके, राइट, सो दैट इज द डेफिनेटली रिक्वायर्ड. ठीक है. एंड नेक्स्ट, ओके, एरर नोटबुक का मेथड. सो रिमेंबर दिस वन,
एरर नोटबुक विद दैट। ओके, आई टोल्ड ऑलरेडी एक नोट्स रखो, नोट्स में कौन सा कॉन्सेप्ट में आप वीक हो रहे हैं उसमें लिख लेना, राइट, नोट डाउन दोस। ओके, एक छोटा एक स्मॉल पॉकेट डायरी जैसा बुक मिलता है ना, वो ले लेना, राइट। सो जस्ट मेक ए नोट, ओके, ये एरिया में आपको दिक्कत हो रहा है वहां पे, ओके, जस्ट नोट डाउन थिंग्स, ओके, राइट। सो ट्रैक द कॉन्सेप्ट्स, कैलकुलेशन एंड एग्जाम एरर्स। Okay, exam errors in the sense in case if you are giving any class tests or any टेस्ट सीरीज दे रहे, सब्जेक्ट खत्म होते ही आप टेस्ट सीरीज दे रहे, ओके, उसमें लिख देना, ओके, नोट डाउन, ओके, दीज क्वेश्चंस आई मेड मिस्टेक्स, ओके, दिस इज माय मिस्टेक, क्या मिस्टेक किया वो भी लिखो आप, ओके, मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक किया ये कॉन्सेप्ट में, ओके, ये मैंने सोचा था वहां पे कुछ अलग से कॉन्सेप्ट लगाना था, ओके, मेक ए नोट डाउन, ओके, नोट डाउन ऑल दोस थिंग्स, ओके। जब आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं आप वो एरर्स जो भी आप किया नोट डाउन, ओके, इन ए प्रॉपर नोटबुक, एक छोटा सा नोटबुक ले लो, राइट, पॉकेट डायरी जैसा सिंपल नोटबुक, उसमें ओके नोट डाउन दैट। सो आपको हमेशा याद रहेगा, ओके, ये क्वेश्चन में मैंने मिस्टेक किया था, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, जब दोबारा सेम टाइप क्वेश्चन होगा, ओके, सेम, ओके, मिस्टेक रिपीट नहीं होना चाहिए, सेम मिस्टेक अगर फिर से कर रहे हैं आप, देयर इज नो इंप्रूवमेंट, इज दैट क्लियर, राइट, दोबारा सेम मिस्टेक नहीं होना चाहिए, राइट, दैट यू शुड रिमेंबर, ओके। सो फाइन, so next subject wise revision plan, I told already subject wise revision plan ना, okay, इसके लिए ऐसा कर लो, एक टेबल बना दो, I am just giving rough idea, notes revision, notes revision मैंने क्या बोला, every 45 days minimum, ऐसा टेबल बना लो, okay, वर्कबुक मैंने बोला every 2 months, okay, 2 मंथ्स या तो 3 मंथ समझ लो, ओके, जल्दी आपका हिसाब से आपका कितना सब्जेक्ट खत्म हो गया, कितना सब्जेक्ट पेंडिंग है, एक शीट बना लो, ओके, और पीवाईक्यू, इज दैट क्लियर, राइट। हाँ, सो देखो अभी क्या हो रहा है, सो हाउ यू मेक द टेबल, दिस इज हाउ यू मेक द टेबल। सो अकॉर्डिंग टू द डेट के हिसाब से मैं रफली आपको ओके दे रहा हूँ, रफली आइडिया दे रहा हूँ ऐसा, ओके, सब्जेक्ट रफ आइडिया दे रहा हूँ आपको, ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके, आज का डेट फॉर एग्जांपल ऐसे, ओके, लेट्स टेक 15 जून, 15 जून को आपने सब्जेक्ट अगर कंप्लीट किया, 15 जून को सब्जेक्ट कंप्लीट किया, तो नेक्स्ट 45 डेज में ओएस का रिवीजन फिर से करना। सो 15 जून के बाद नेक्स्ट 45 डेज मतलब क्या होगा, जुलाई एंडिंग, जुलाई 30, ओके, राइट, आई से 15 जून इज द सब्जेक्ट कंप्लीटेड, सो नेक्स्ट रिवीजन कब करना है, नोट्स का रिवीजन 45 डेज है, सो इसका मतलब ओके आई से 30th जुलाई, 30 जुलाई में मिनिमम, ओके, 30 जुलाई तक फिर से ओएस उठा के आपको करना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट कब करना चाहिए, अगेन 45 डेज है, अगेन 45 डेज मतलब कब होगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 15 सितंबर, ऐसा लिख दे रहा हूं, 15 सितंबर नोट्स का रिवीजन, ओके, राइट, 15 सितंबर हो गया, राइट, उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट अक्टूबर 30, ओके, 30th अक्टूबर, राइट, ये टेबल हो गया नोट्स के लिए, इधर ये नोट्स रिवीजन के लिए। और एवरी 2 मंथ्स वर्कबुक का, अब समझो 15 जून है, ओके, 2 मंथ्स के बाद फिर से फर्स्ट रिवीजन करोगे, राइट, हाँ, 2 मंथ्स के बाद मतलब क्या होगा, जुलाई अगस्त, ओके, अगस्त 15th अगस्त करोगे, राइट, अगेन आफ्टर 2 मंथ्स, ओके, 15 अगस्त हो गया, राइट, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ओके, अक्टूबर 15 करोगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ओके, एक बार दिसंबर में कर लोगे, दिसंबर 15 तक, उसके बाद जनवरी में अगर टाइम है तो आप करो, ओके, 4 रिवीजन हो गया, 3 रिवीजन मिनिमम करना है, और एक रिवीजन लगा सकते हैं तो लगा लो, इजलिए, और एवरी 3 मंथ्स को पीवाईक्यू रिवीजन होना चाहिए, एवरी 3 मंथ्स को पीवाईक्यू रिवीजन होना चाहिए, यानी अभी फॉर एग्जांपल 15 जून को आपका पीवाईक्यू खत्म हो गया, तो नेक्स्ट फर्स्ट रिवीजन कब होगा, 3 मंथ्स के बाद, सो जुलाई, अगस्त, सितंबर, सो 15 सितंबर को फर्स्ट रिवीजन होगा पीवाईक्यूज का, ओके, एक सब्जेक्ट का, राइट, नेक्स्ट उसके बाद 3 मंथ्स के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ओके, 2 ही रिवीजन आ रहा है यहाँ पे, 15 दिसंबर, ओके, तो ये हो गया, अगर आपका बीच में अगर निकाल सकते हैं तो और एक बार भी लगा लो, ओके, नहीं तो इसको भी अगर आप 3 रिवीजन मिनिमम करना है तो इसको भी 2 मंथ्स करना है तो 2 मंथ्स का, इधर लिया, राइट, बट रिमेंबर एटलीस्ट, ओके, नंबर ऑफ रिवीजन्स, मेक एज मच एज यू कैन, जितना हो सके उतना ज्यादा रिवीजन आप कर लो, इधर रिमेंबर ये डेट के साथ आप शीट बना लो ऐसा, इधर
आपका सब्जेक्ट ये कंप्लीट हो गया, अगला 45 डेज में नेक्स्ट ये होगा, अगला 2 मंथ्स के बाद ये वर्कबुक रिवीजन होगा, अगला नेक्स्ट 3 मंथ्स के बाद ये पीवाईक्यू रिवीजन होगा। अब पीवाईक्यू को भी 3 रिवीजन भी नहीं आ रहे हैं तो इसको भी 2 मंथ्स कर लो, इसको सेम कर लो, इसको भी 2 मंथ्स कर लो, राइट है। क्योंकि भाई ये प्लान इसलिए कर रहा हूं, ओके, ये प्लान अच्छा सूटेबल किसके लिए होगा, अभी तक ऑलरेडी किसी का 3-4 सब्जेक्ट हो गया, 4 सब्जेक्ट ऑलरेडी हो गया उनका पीवाईक्यू, सो उनका तो बहुत अच्छा प्लान चल जाएगा। मगर कुछ लोग अभी अभी स्टार्ट किया प्रिपरेशन, सो यू स्टार्टेड इन द मंथ ऑफ जून, सो मे बी थोड़ा आपको 2 रिवीजन 3 मंथ्स को एक बार रिवीजन नहीं हो पाएगा, तो 2 मंथ्स को एक बार करो, क्योंकि 3 रिवीजन मिनिमम करना है, 3 रिवीजन मिनिमम करना है, ओके राइट। सो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक अच्छे से डेट्स के साथ में ऐसा हर सब्जेक्ट का पूरा सब्जेक्ट लिख लो, पूरा सब्जेक्ट लिखो, राइट। हर ऐसा प्रॉपर डेट्स के साथ में नोट्स का रिवीजन कब होगा, वर्कबुक का रिवीजन कब होगा और पीवाईक्यू का रिवीजन कब होगा, एक प्रॉपरली बना लो पूरा शीट, ठीक है, राइट। आई थिंक दैट इज क्लियर फॉर एवरीवन, राइट। नेक्स्ट फॉर्मूला एंड शॉर्ट नोट्स। So in case if you already prepared short notes, okay, because some students will prepare the short notes, especially for computer science, okay, generally for every subject it is not required, like for example operating system है, okay, ज्यादा short notes की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा definitions अगर लिख लिया तो ठीक है, okay, like for example subjects like discrete maths है उसके लिए short notes जरूरत है, engineering maths के लिए short notes की जरूरत है, right, maybe like any theoretical subjects, lengthy subjects like computer networks के लिए short notes जरूरत है, right, COA के लिए जरूरत है, so that is your choice। अगर आपने already बना दिया, if you already made the short notes, then you do that revision, if you don't made the short notes, no problem, अभी करे तो ठीक है, नहीं करे तो भी ठीक है, right, otherwise you can find somebody short notes like a topper short notes, you can talk to the teachers will provide you, okay, कोई already teacher already बना चुका है short notes, okay, वो already available है तो आप ले सकते हो उसको, ठीक है ना, राइट, दैट इज फाइन, ओके, राइट, दैट इज अबाउट शॉर्ट नोट्स, आई थिंक दैट इज क्लियर फॉर एवरीवन, राइट, ओके। सो नेक्स्ट डेली रिवीजन शेड्यूल में क्या होगा, जब इतना सारे ओके हर 45 डेज को ओके नोट्स का रिवीजन चल रहा है, और 2 मंथ्स को ओके फॉर एवरी 2 मंथ्स वर्कबुक का रिवीजन चल रहा है, एंड फॉर एवरी 2 मंथ्स और 3 मंथ्स पीवाईक्यू रिवीजन चल रहा है, तो इन एवरी डे डेली रिवीजन शेड्यूल 1 to 2 hours इफेक्टिव रिवीजन होना चाहिए, दैट इज कंपल्सरी, 1 to 2 hours इफेक्टिव 2 hours के लिए पक्का रिवीजन के लिए रखना ही रखना है, 1 hour 1 to 2 hours, ओके, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप रनिंग सब्जेक्ट को करते समय में प्रीवियस सब्जेक्ट को अगर पूरा टच भी नहीं किया तो दैट इज वेरी वेरी डेंजर, वेरी वेरी डेंजर, यू विल फॉरगेट द कॉन्सेप्ट्स, सिंपल एज दैट, ओके। सो आप कैसे टाइम निकालते, कैसे प्लान बनाते शेड्यूल, सो आप अच्छे से ओके इट इज यूर ओके टाइमलाइंस, यूर डिसीजन, आप कितना टाइम क्लास कर रहे हैं, ओके, किसी का क्लास 6 घंटा चल रहा है, किसी का क्लास 4 घंटा चल रहा है, और कोई ऑनलाइन में किसी का क्लास 3 घंटा ही चल रहा है, राइट। सो अपने टाइम के हिसाब से वर्किंग प्रोफेशनल है तो आप कैसे मैनेज करोगे, somebody is already doing the job, so you plan accordingly, okay, right, so based on that, ठीक है। So important note in the revision, okay, this is what generally I followed, okay, right, in my preparation whenever I feel important note, okay, right, understand here in revision, explain hot topic to yourself, okay, अगर आपको लगता है ओके कुछ टॉपिक बहुत ही खतरनाक है, थोड़ा बार बार आप भूल जा रहे हैं, ओके राइट, थोड़ा 10 मिनट ओके 15 मिनट टाइम लेके आप अपने आप को एक्सप्लेन करो, अपने आप को एक्सप्लेन करो, ओके इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है, एज ए टीचर आप 10 मिनट के लिए टीचर बन जाओ, अपने आप को एक्सप्लेन करो, राइट, तो अपने आप को एक्सप्लेन करने से क्या होगा, वो अच्छे से याद रहेगा माइंड में, ठीक है ना, राइट। सो दिस टेक्निक जनरली आई फॉलोड, राइट, इट इज आई मीन आई एम गिविंग यू द एडवाइस, ओके, आप इसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि देखो याद रखेंगे बोले तो क्या होगा ना, राइट, बाय हार्ट करना, ओके, रटना, सो वेरी टफ है, ओके राइट, एक दो टॉपिक नहीं है ना, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, राइट, सो हर सब्जेक्ट में बहुत सारे टॉपिक्स है, इतना सारे याद रखना बाय हार्ट करना बहुत मुश्किल है, राइट, सो बेटर ओके अगर आपको कोई टफ टॉपिक लगता है तो एक्सप्लेन टू योरसेल्फ, ओके राइट, थोड़ा 10-15 मिनट के टीचर बन जाओ, थोड़ा अपने आप एक्सप्लेन कर लो, ठीक है, राइट, तो अच्छे से याद रहेगा माइंड में, ठीक है, okay, right, so that's all, okay, final takeaways series here, revise smarter not harder, okay, right, so this is very very important, so all the best, okay, I think everyone is doing a very serious preparation and
sincere preparation, right? Be sincere in your preparation. Please understand that. And next I'll tell you very, very important line. Very, very important line. Generally I say, okay, nobody will fail. Nobody will fail after the preparation. People will fail in preparation itself. आप ऐसे ही आप प्रिपरेशन कर रहे हैं नॉर्मल वे में, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं है, एक प्रॉपर ओके रिवीजन स्ट्रैटेजी नहीं है, so definitely it is not going to work out. Is that clear, right? So people never fail after the preparation, people fail in preparation itself. तैयारी में ही फेल होते हैं, राइट? अच्छे से तैयारी करने के बाद कोई फेल नहीं होगा, तैयारी में ही फेल होते हैं. बस आपको क्लास को आ रहा है, बस जा रहा है, क्लास को आ रहा है, जा रहा है, ऐसा नहीं चलेगा. ओके, वर्कबुक का टाइमलाइन, पीवाईक्यू का टाइमलाइन, रिवीजन का टाइमलाइन. ओके, टेस्ट सीरीज इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. So test series strategy also, okay, right? Okay, we'll make a video, okay, very soon. I'm planning, so I will provide that also, right? So that will be useful for you, okay, right? So all the best. Do your preparation very sincerely, right? So take care. All the best.